But let me just give some more general. I think that it's actually very good that we're talking about the attributes of God right after Christmas. जो खुदा की क्रिएशंस है, खुदा ने जो बनाया, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। And the reason I think it's very good is because, of course, Christmas is when we celebrate God with us. Amazing. मैं इसलिए इसे ज़रूरी समझता हूँ आज के रोज़, क्योंकि क्रिसमस के बाद क्योंकि खुदावन हमारे साथ है। So Christmas is that point that God entered the humanity entered the creation and was actually physically a part of His creation. खुदा एक इंसान बन के है, एक इंसानी शक्ल में है इस ज़मीन पे, ताकि हम उसके बारे में जान सकें। And so the question might be, to start us off, is why should we study the attributes of God? सवाल ये है कि हमने क्यों ये पढ़ना ज़रूरी है, जानना ज़रूरी है। And I think that we can look at a verse here. The verse is Jeremiah, chapter 9, verse 23 through 24. Yes, Jeremiah, chapter 9, verse 23 through 24. Jeremiah 9 chapter 9, verse 23 through 24. And I will read in English. Sure. Keep those with you when you come back. नौ बाप की दुआ 9 बाप 23 से 24। I'll go ahead and read in English. Okay. So Jeremiah chapter 9, verse 23 through 24. All right. Thus says the Lord, let not the wise man boast in his wisdom, let not the mighty man boast in his might. Let not the rich man boast in his riches, but let him who boast in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, who practices steadfast love, justice, and righteousness in the earth. For in these things I delight, declares the Lord. खुदावन यूँ फरमाता है कि ना साहिब हिकमत अपनी हिकमत पर और ना कवि अपनी कुव्वत पर, ना मालदार अपने माल पर फख्र करे, लेकिन जो फख्र करता है उस पर फख्र करे कि वो समझता और मुझे जानता है कि मैं ही खुदावन हूँ, जो दुनिया में शफ़क़त व आदत और रास्तबाज़ी को अमल में लाता हूँ, क्योंकि मेरी खुशनुदी इन ही बातों में है। खुदावन फरमाता है। I think here we see that the importance of knowing who God is. यहाँ पे मैं समझता हूँ कि अहमियत ये रखता है कि खुदा को हम जाने कि खुदा कौन है। In fact, it says if we boast in anything, we should boast in knowing God. अगर हमें खुदा को ढूंढना है, तलाश करना है, अगर हम खुदा को चाहते हैं कि हमारे पास हो, इसलिए ज़रूरी है कि खुदा की तलाश करें। I think about all of the people around and how many things they boast in. They boast in all sorts of things. But that is not what we should be boasting in. We should be boasting in this. Do we know God? दुनिया में बहुत से लोग हैं, हमारे इर्द-गिर्द काफ़ी लोग हैं जो कि मुख्तलिफ चीज़ों को तलाश में रहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये ज़रूरी है। हमें पहले कलाम मुकद्दस में से खुदा को तलाश करना। There is a caution. I think the caution is that we may know about God, but not actually know God. एक परहेज हम खुदा को जानने में परहेज करते हैं, हम खुदा को ढूंढना चाहिए। So my hope is, as we study, that this is not just an intellectual sort of thing, that we learn new facts about God, but that we actually relate that to our own lives so that we know God. जो हम अभी स्टडी करेंगे वो जो हमारे फैक्ट्स हैं वो ये नहीं होंगे कि हम खुदा के बारे में जानें, हम कोशिश करेंगे कि वो सीखें जो हमें सीखने की ज़रूरत है खुदा के बारे में। And so as we go through the verses and we study the verses, and let's say that we talk about, I'm looking here, it says God is love, right? That's one of the attributes. What does that truly mean? God is love, and then how do we respond to that? जैसे कि हम आयत में पढ़ेंगे, जैसा कि एक आयत है कि खुदा प्यार है, तो इस आयत का क्या मकसद है कहने का, इसमें क्यों लिखा हुआ है, हम ऐसे स्टडी करेंगे।
What is an attribute? That's another question. खसूसियत क्या होती है? So when we say attribute, of course, we're talking about the actual character of God. खसूसियत होती है जो एक करैक्टर बताती है खुदा, जो हम आज पढ़ेंगे. We're not talking about an emotion. हम जो इमोशंस हैं उनके बारे में नहीं पढ़ेंगे, एहसास के बारे में नहीं पढ़ेंगे. You know, I may say I love something, but that's probably an emotion. तो मैं अगर किसी से प्यार करता हूँ, ये एक एहसास है मेरा किसी के लिए. But when we talk about an attribute, we're talking about the actual character of God. अगर जब हम किसी के खसूसियात के बारे में पढ़ते हैं, And तो ऐसा है कि हम खुदा के करैक्टर के बारे में जान रहे हैं. all attributes relate to each other. तमाम खसूसियात एक दूसरे से मिलती हैं. So we can't separate one attribute alone. They are all interconnected as a part of who God is. हम किसी एक खसूसियात को अकेला नहीं छोड़ सकते, सब एक दूसरे के साथ मिली हुई हैं, कनेक्टेड हैं. So we say God is love. हम कह सकते हैं कि खुदा प्यार है. But we also know that God is wrath. हम ये भी जानते हैं कि खुदा Wrathful, and he has holy anger. कि एक मुकद्दस गुस्सा भी है, यानी कि हमारा हिसाब भी होगा. So here's two attributes, love and wrath. इधर दो खसूसियात हैं, एक गुस्सा और एक प्यार. Now a lot of people like love. काफी लोग प्यार पसंद करते हैं. That's an easy one. ये आसान है. But what about wrath? गुस्से के बारे में क्या? That's not so easy. ये मुश्किल है. But God is both. लेकिन खुदा में दोनों खसूसियात हैं. And you can't say God is now loving, but he's not wrathful. He's both. आप ये नहीं कह सकते कि खुदा बहुत अच्छा है, प्यार करने वाला है, गुस्सा नहीं करता. ये गलत है. And the other thing, again, I would like to stress is that when we talk about the attributes of God, we've got to find those attributes here in the Bible. एक और बहुत ज़रूरी बात कि जब हम खसूसियात के बारे में बात करेंगे खुदा की, तो हम उन खसूसियात को कलाम मुकद्दस में भी ढूंढेंगे. Because if not, we will have an improper understanding of who God is. जब तक अगर हम कलाम मुकद्दस को इस्तेमाल नहीं करते, तब तक हम प्रॉपर तरीके से खसूसियात के बारे में नहीं जान सकेंगे. So we've got to read the verses, we've got to think about what does that verse mean, and how does that relate to God's character. हमें कलाम मुकद्दस को पढ़ना पड़ेगा, आयत को पढ़ना पड़ेगा, उन्हें समझना पड़ेगा और हमें पता चलेगा कि खुदा की खसूसियात क्या है. I have to admit I'm a little scared to teach today. मैं एक चीज़ सब करना चाहता हूँ कि मैं आज डर रहा हूँ आपको पढ़ाते हुए. It's not because you guys are intimidating me. ऐसा नहीं कि आप लोग मुझे परेशान कर रहे हैं. But it's because God is intimidating me. ये ऐसा है कि खुदा मुझे परेशान कर रहा है. I'm a sinful man trying to tell you about who God is. मैं गुनाहगार शख्स हूँ और आपको बता रहा हूँ कि खुदा कौन है. And that's very scary. ये बहुत डरावना है. Because I could easily misrepresent God. क्योंकि मैं गलत भी बातें कर सकता हूँ खुदा के बारे में गलती से. I don't want to do that. मैं ऐसा नहीं करना चाहता. So it's important that we study who God is, but it's also important that we're very careful when we say God is this or that. We've got to go back to the Bible. जब हम खुदा के बारे में पढ़ते हैं तो ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि हम ध्यान से जाने के खुदा कौन है, खुदा के बारे में पढ़े, कलाम मुकद्दस का इस्तेमाल करें.